Hello everyone, welcome back. In today's video, we'll be discussing about a very important SAQ that is frequently asked in your university exams, that is the flexor retinaculum. In the previous video, I've already discussed about the muscles of the forearm and the hand. In this video, I'll be dealing with the flexor retinaculum. Now, from the mnemonic, she looks too pretty, try to catch her. You have already learned about the carpal bones. On the medial side, we have the pisiform and the hamate bone. Whereas laterally we have the scaphoid and the trapezium bone. Now, the retinaculum or the band which bridges both this apna carpal bones is called as apna flexor retinaculum. This converts the carpal bones into a tunnel, and this tunnel is called as the carpal tunnel. But obvious. अब इस टनल है तो इस टनल से कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स पास करेंगे ऑब्वियसली. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम. ओके, हम आगे देखेंगे. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. You can see this band over here. This is apna flexor retinaculum. You can see some structures are over it that will basically form the superficial relations. Some structures are passing deep to it that will form the deep relations. Now, talking about apna flexor retinaculum, this flexor retinaculum, as I have already told you about the attachments, medially it is attached to the pisiform and the hook of hamate, plus laterally to the अपना tubercle of scaphoid and the crest of trapezium. Okay, if you write scaphoid and trapezium, it's okay, but for better marks, make sure that you write the tubercle of scaphoid and the crest of trapezium. So you can read it that it bridges the anterior concavity of the carpal bones, converts it into a tunnel. The thenar and the hypothenar muscles originate from here. If we see medially, it is attached to the pisiform and the hamate bone. ऐसे एक अपना flexor retinaculum होता है जो अपने कॉन्केविटी को ब्रिज करता है ऑफ आवर कार्पल बोन्स. नाउ हाँ, दिस वाज द डायग्राम. ये लाइन डायग्राम भी बना सकते हो और यहाँ से यहाँ तक तुम दिखा सकते हो. दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. मेक श्योर एनाटॉमी एग्जाम में तुम डायग्राम्स बनाओ. ओके, सो ये दिस इज द पिसिफॉर्म, द हुक ऑफ द हैमेट व्हिच लाइज मीडियली, whereas laterally we have the scaphoid and the trapezium. So this is अपना flexor retinaculum. Now talking about on the this ये तो हो गया medial और the lateral attachments. On the either sides you can see that there is ऐसा कुछ ligament type बना हुआ है. Talking on the lateral side, so the lateral deep slip, जो हमारा जो lateral deep slip है, on the either side the retinaculum basically have slips. So अपना जो lateral deep slip है, that is attached on a groove on our अपना trapezium bone, so that converts it into a tunnel. यहाँ पे इस डायग्राम में दिया नहीं अच्छे से. Then two, ये अपने BDC का ही डायग्राम है. It converts into a tunnel, and through this tunnel passes अपना tendon of flexor carpi radialis, the lateral deep slip. आप जैसे तुम्हें पता ही है कि स्कैफोइड के नीचे ट्रपेजियम, तो यहाँ पर जो ट्रपेजियम होगा उसके ग्रूव पे बेसिकली ये अटैच होता है अपना lateral deep slip and converts it into a tunnel for the passage of the tendon of the flexor carpi radialis. On the same, I mean on the medial side, आपकी superficial slip जो है that attaches to the pisiform bone and forms another tunnel which is called as the ulnar tunnel. And ये जो ligament आप देख सकते हो उसको अपन बोलते हैं volar carpal ligament. So on the lateral side we have an area for the passage of the flexor carpi radialis, whereas on the medial side we have for the passage of the ulnar nerve and artery, that is our ulnar tunnel, and the ligament is called as the volar carpal ligament. Okay, so यही सब चीजें मैंने वापस थियरी में लिखी हुई है, तो नोट्स जब आप पढ़ोगे. Flexor retinaculum and carpal tunnel, strong fibrous band that bridges the concavity of the carpal bones, converted into a tunnel. Carpal tunnel, medially pisiform bone, hook of hamate, laterally crest of trapezium tubercle. On either side, retinaculum has a slip, lateral deep slip and medial superficial slip. Volar carpal ligament attached to the pisiform bone gives passes for the ulnar nerve and vessels. Lateral deep slip attached to the medial lip, which converts it into a tunnel for the flexor carpi radialis. Okay, ये सब तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में समझा दिया है. अगर एक बार थियरी पढ़ोगे तो मन में बैठ जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग इट वंस अगेन. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस, यू हैव द स्ट्रक्चर्स. ये लाइन डायग्राम है बेसिकली. You have the structures passing deep and superficial. This is another line diagram. This is okay.
उसी अगर हम डायग्राम, हाँ ये डायग्राम में देखेंगे, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीडियन नर्व. हमारी मीडियन नर्व, दिस इज बेसिकली द पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. इधर मैं बस पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच लिख रहा हूँ. पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. Then we have अपना tendon of palmaris longus. So 1, 2, tendon of palmaris longus. Then we have the अपना palmar cutaneous branch of ulnar nerve. यहाँ पे हमारी ulnar nerve है, उसका ये palmar cutaneous branch है अपने पास. Then we have अपना ulnar vessels. Ulnar vessels किधर दिए, हाँ ये रहा ulnar artery. And in the end we again have the ulnar nerve. Ulnar nerve itself, not the palmar cutaneous branch. So talking about अगर हम structures देखेंगे superficially, so it is the palmar cutaneous branch of median nerve, tendon of palmaris longus, palmar cutaneous branch of ulnar nerve, ulnar vessels, and the ulnar nerve itself. Structures passing deep to the flexor retinaculum, जनरली हम इस डायग्राम से समझते हैं उसको. Structures passing deep में हमारे पास है the median nerve, the four tendons of the flexor digitorum superficialis, four tendons of the flexor digitorum profundus. Then we have the tendon of flexor pollicis longus, the ulnar bursa and the radial bursa, and the tendon of the flexor carpi radialis, which lies between the deep slip and the groove for the trapezium. ये मैंने यहाँ पे जो समझाया था वही. ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में अच्छे से बताया कि ये सब मसल्स याद रखना, तो मैं पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से पास हो रहा है. So this is basically the structures passing deep to the flexor retinaculum. Okay. अब ये वापस वही लाइन डायग्राम है कि हाँ देखो, इस लाइन डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि वी हैव अपना अल्नार नर्व, अल्नार आर्टरी, देन दी पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व. एक सेकंड के लिए अगर मैं इसको इरेज करूं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, ज्यादा ही हो गया. एनी विच वेज अगर हाँ, सो दिस इज अपना अल्नार नर्व, ulnar artery. This is the cutaneous branch of ulnar nerve. Then the tendon of the tendon of the palmaris longus. Then we have अपना वो palmar cutaneous branch of median nerve, and then the median nerve itself. Okay. Talking about the structures passing deep to the flexor retinaculum, we have अपना median nerve, tendon of the flexor pollicis longus, tendon of the flexor digitorum profundus, tendon of the flexor pollicis longus is also flexor digitorum superficialis, ulnar bursa and the radial bursa. Ulnar bursa and the radial bursa. Okay. सो आई होप आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है वो अच्छे से समझा रहेगा. ये डायग्राम देख लेना, ऐसे ही आपको लाइन डायग्राम जो है वो एग्जाम में बनाने हैं. एंड इफ यू हैव enjoyed watching this video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can directly DM me on Instagram, या फिर you can text your doubts in the comment section. I will surely reply to it. Make sure you keep studying. अभी तो एग्जाम भी पास आ गई है. So all the best. Thank you.